हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था, गवर्नमेंट ने जीएसटी में फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 में टैक्स कंपोनेंट पे करने पर सेक्शन 73 में इशू किए गए सभी डिमांड नोटिस को इंटरेस्ट और पेनाल्टी को वेव ऑफ किया है। कंडीशन ये है कि आप एक प्रिस्क्राइब डेट जो कि 31 मार्च 2025 है तब तक अपना पूरा टैक्स पेमेंट कर दें और एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में गवर्नमेंट को अप्लाई करें। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक सर्कुलर 15 अक्टूबर 2024 को इशू किया गया है, जिसमें 16 क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। वो 16 क्वेश्चन अलग अलग केसेस से रिलेटेड है, अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ। फर्स्ट, वेदर द बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 128A विल बी एप्लीकेबल टू टैक्स पेयर्स who have paid the tax components in full before the date on which the said section has come into effect। हम सभी जानते हैं सेक्शन 128A 8 अक्टूबर से इफेक्ट में आया है और उसके पहले की अगर टैक्स पेमेंट फुली कर दिया गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये यहाँ पे क्लैरिफाई गवर्नमेंट ने किया है। इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी मेंशन दैट ऑल सच अमाउंट पेड टुवर्ड द सेड डिमांड अप टू द डेट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 128A। मतलब कि 128A में जो भी डेट प्रिस्क्राइब की गई है उसके पहले किए गए सभी टैक्स पेमेंट को वो अलाउ करेंगे, irrespective of whether such payment was made before the issuance of demand notice or demand order or after that shall be considered as paid towards the amount payable in subsection 128A। Next question है, whether the amount recovered by the tax officers as tax due from any other person on behalf of the taxpayer against a particular demand can be considered as tax payment। Answer is yes। The said amount recovered by the tax officer as tax due from the other person on behalf of the taxpayer against a demand shall also be considered as the tax paid towards the said demand for the purpose of section 128A। Next question है, whether the amount recovered by the tax officer as interest or penalty or both pertaining to demand under section 73 pertaining to financial year 17-18, 18-19 or 19-20 can be adjusted against the tax amount payable towards the demand made under section 73 pertaining to the said financial years। मतलब कि जो इंटरेस्ट और पेनाल्टी अगर कोई रिकवर कर ली गई है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा तो क्या उसको अब काउंट किया जाएगा इस एमनेस्टी स्कीम में? आंसर इज नो। इट इज मेंशन दैट एज पर द थर्ड प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 128A नो रिफंड ऑफ सच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और पेनाल्टी और बोथ इज अवेलेबल टू एनी टैक्स पेयर। अकॉर्डिंगली एनी अमाउंट पेड बाय द टैक्स पेयर और रिकवर्ड बाय द टैक्स ऑफिसर एज इंटरेस्ट और पेनाल्टी कैन नॉट बी एडजस्टेड टुवर्ड डिमांड और अमाउंट पेबल एज टैक्स। Next question है, whether the benefit provided under section 128A will be applicable in cases where the tax due had already been paid and the notice of demand order under section 73 only pertains to interest and or penalty involved। मतलब कि टैक्स डिमांड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट जो ऑर्डर है वो सिर्फ इंटरेस्ट और पेनाल्टी के लिए किए गए हैं। आंसर इज वेदर वेयर द टैक्स ड्यू हैड ऑलरेडी बीन पेड। आंसर है where the tax due has already been paid and the notice or demand orders under section 73 only pertains to interest and or penalty involved, the same shall be considered for availing the benefit of section 128A। However, the benefit of waiver of interest and penalty shall not be applicable in case where interest has been demanded on account of delayed filing of returns or delayed reporting of any supply in the return। As such, interest is related to demand of interest on self-assessed liability and does not pertain to any demand of tax due and is directly revocable under subsection 12 of section 75। Next question है, whether the benefit under section 128A is available if the taxpayer intends to avail partial waiver of interest or penalty or both on certain issues by making part payment of that demand in the notice and एज द केस में भी और ऑप्ट्स टू लिटिगेट फॉर रिमेनिंग इश्यूज। मतलब कि एक टैक्स का जो असेसमेंट ऑर्डर एसएससी को मिला है उसमें से कुछ पार्ट को वो पे करना चाहता है और कुछ पार्ट के लिए स्ट्रगल करना चाहता है अपील्स में, ट्रिब्यूनल में, ऐसा। आंसर इज नो। सेक्शन 128A 1 क्लियरली प्रोवाइड्स दैट द वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनाल्टी और बोथ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड इन द नोटिस पब्लिक स्टेटमेंट और ऑर्डर इज पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where the notice order involving multiple periods from ranging from the period for which waiver provided in section 128 is applicable
एंड इंक्लूड सम अदर टैक्स पीरियड ऑल्सो। मान लीजिए उसका 5 साल का एक साथ असेसमेंट ऑर्डर दिया गया है जिसमें अलग अलग पेमेंट की ईयर की डिमांड इशू की गई है, तो क्या ऐसे केस में वो 128A का बेनिफिट ले सकता है? आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। The taxpayer is eligible to apply for waiver of interest or penalty or both in such cases where the demand notice order spans tax period covered under section 128A and those not covered under said section. However, as per sub rule 4 of rule 164 जो कि 128 का रूल है, the taxpayer shall be required to pay the full amount of the tax demanded in the notice, statement, order as the केस में भी टू अवेल द बेनिफिट फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनाल्टी और बोथ। मतलब कि इसके हिसाब से जो उसमें टैक्स कंपोनेंट होगा वो आपको पूरा पेमेंट करना ही पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पीरियड का इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपको वेव ऑफ हो जाएगा और बचे हुए पीरियड का इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपको पे करना पड़ेगा। फर्दर, दो द अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड शैल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड एज पर द नोटिस, स्टेटमेंट, ऑर्डर एज द केस में बी फॉर होल ऑफ द पीरियड covered under said notice statement, but the waiver of interest or penalty or both under section 128A shall only be applicable for the period specified in section 128A and not for the period not covered under said section. On the payment of full amount demanded in the notice, statement, order, if the proper officer finds that the applicant is eligible for waiver of interest or penalty or both for the tax period covered under section 128A, he will reduce the liability to extent in his order in form number GST SPL 05. And the remaining liability of interest or penalty or both for the tax period not covered under section 128 remains payable by the taxpayer। मतलब कि वो पेबल रहेंगे ही इंटरेस्ट और पेनाल्टी। The said amount shall be required to be paid by the applicant within 3 months from the date of issuance of order in form number GST SPL 05 or form number GST SPL 06 as the case may be। If the said amount is not paid within the time limit as mentioned above, the order in form number GST SPL 05 or GST SPL 06 as the case may be, the waiver of interest or penalty or both under section 128A as per the order issued in form number GST SPL 05 or GST SPL 06 shall become void। Next question है, whether the notice, statement, order issued under section 73 involve multiple issues and one of them is regarding the demand of erroneous refund, whether the applicant can be filed for waiver of interest or penalty or both under section 128A। क्वेश्चन है कि जब 73 में जो इशू रेज हुए हैं वो मल्टीपल इश्यूज के लिए है, क्या उसमें से एक ये भी है कि उन्होंने एरोनियस रिफंड लिया है, क्या 128A में उसका एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है? आंसर इज यस। हाउएवर, एज पर रूल सब रूल 3 ऑफ रूल 164 द टैक्स पेयर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड इन द नोटिस, स्टेटमेंट, ऑर्डर एज द केस में बी इंक्लूडिंग ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड ऑफ एरोनियस रिफंड ऑल्सो टू अवेल द बेनिफिट ऑफ वेवर ऑफ interest or penalty or both under section 128A। next question है, in case where department has filed an appeal against the order mentioned in clause B or clause C of subsection 1 of 128A and the appellate authority or appellate tribunal or the court or revisional authority has issued an order enhancing tax liability अगर किसी order के कारण enhance हो जाती है, and in the meanwhile the proper officer has issued in order in form number SPL 05 under section 128A and the taxpayer had not paid the additional amount of tax liability within the specified time limit, what will be the status of conclusion and proceeding of section 128A? आंसर है yes, as per second proviso to section 128A, second proviso to section 128A, the conclusion of proceeding in such cases is subject to the condition that the said person pays an additional amount of tax payable। मतलब अगर कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाता है, टैक्स तो उसको पे करना ही होगा। इफ एनी अकॉर्डिंग विद ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और द अपीलेट ट्रिब्यूनल और द कोर्ट और द रिविजनल अथॉरिटी एज द केस में बी विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर 3 महीने के अंदर डेट ऑफ ऑर्डर के अंदर कोई उसका टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, तो टैक्स लाइबिलिटी को पे करना कंपलसरी हो जाएगा एसएससी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसेक्शन 3 ऑफ 128A refers to only appeal or writ petition। In this regard, whether matters where SLP filed by the applicant is pending before Supreme Court, what is the procedure to be followed by the taxpayer to avail the waiver of interest or penalty or both? Answer is yes, in such cases also the applicant will be required to withdraw the said special leave petition
and file an application in form number GST SPL 01 or SPL 02 as the case may be, along with proof of withdrawal of SLP or the copy of application or any other document filed or withdrawal of SLP where the order for withdrawal of SLP has not been issued at the time of filing application in form number GST SPL or SPL 02. In such cases, procedure mentioned in para number 3.1.6 may also be followed. Next question is whether the benefit provided under section 128A will be available for matters involving IGST and compensation cess also. Answer is yes. On joint reading of section 22 of Integrated Goods and Service Tax Act 2017 and 11 of GST Compensation to State Tax 2017 along with section 128A of CGST Act, it becomes clear that benefit provided under section 128A of CGST Act will be available for matters involving IGST and compensation cesses as well. In this regard, it is mentioned that in such cases, full payment of tax means payment of CGST, SGST, IGST and compensation cess also. Next question is whether section 128A covers cases involving demand of irregularity availing transitional credit. Answer is the transitional credit is considered to be availed on the date on which said credit amount is credited in the electronic credit ledger. On reading of Rule 121, read with sub Rule 3 of Rule 117, it is clear that any demand irrespective of transitional credit wrongly availed, whether wholly or partly, can be made under Section 73 or as the case may be under Section 74 also. Therefore, it is mentioned that if the amount of transitional credit has been availed in the period covered under Section 128A and notice for demand of wrongfully credit is issued under Section 73, the same is covered under Section 128A. मतलब कि असेसिंग ऑफिसर के पास पावर था कि वो ट्रांजिशनल क्रेडिट के जो रॉन्ग अवेलमेंट है उसको 73 और 74 दोनों में इशू कर सके. अगर उसने 73 में इशू किया तो फिर 128A का बेनिफिट वो एसएससी ले सकता है. Whether Section 128A will cover waiver of penalties under provision of late fee, redemption, fine, etc. It is clarified that penalty including penalties under Section 73, Section 122, Section 125, etc. demanded under the demand notice, statement, order issued under Section 73 is covered under the waiver provided under Section 128A. However, late fee, redemption, fine, etc. are not covered under the waiver provided under Section 128A. Next question है whether payment to avail waiver under section 128A can be made by utilizing ITC. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए. whether payment to avail waiver under section 128A can be made, payment of tax here obviously can be made by utilizing ITC. Yes, answer is yes. The payment of tax required to be made for eligibility for waiver under section 128A is amount of tax demanded in the notice, statement, order. Therefore, it can be paid either by debiting from electronic cash ledger or utilizing input tax credit by debiting the electronic credit ledger or partly from both also. However, where the demand is in respect of amount tax to be paid in recipient under reverse charge mechanism or by the electronic commerce operator under section 9(5), then the said amount shall be required to be paid by debiting electronic cash ledger only and not through the electronic credit ledger. Further, where the amount has to be paid for demand of erroneous refund, the demand in respect of erroneous refund paid in cash is required to be paid only by debiting the electronic cash ledger and not through the electronic credit ledger. Next question है whether the benefit of waiver under section 128A can be availed for import IGST payable under the Custom Act 1962. Answer is no, because in such cases demand is not issued under section 73 of CGST Act but is issued under the provision of Custom Act 1962 and therefore such cases are not covered under waiver of interest or penalty or both. Next question है with retrospective insertion of subsection 5 and 6 to section 16 of CGST Act, the tax demand in notice, statement, order basis whether the entire tax amount demanded in the notice, statement, order has to be paid in such cases to avail the benefit under section 128A. हम सभी जानते हैं कि सेक्शन 16(4) में लिए गए एक्सेस क्रेडिट को सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 में वेव ऑफ किया गया है.
वो एक अलग सिनेरियो है। बट अगर कोई ऐसी डिमांड नोटिस है जिसमें कि सेक्शन 16(4) की भी डिमांड है और सेक्शन 73 की अलग कुछ डिमांड है, तो क्या वो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? सब रूल 5 ऑफ Rule 164 mentioned that the amount payable in order to avail the benefit under Section 128A shall be calculated after deducting the amount not payable in accordance with subsection 5 or subsection 6 of Section 16 from the amount payable in terms of notice under or statement or order under Section 73 as the case may be. Therefore, the applicant is required to pay only the amount that is payable and calculated after deducting the amount not payable in accordance with subsection 5 and subsection 6 of section 16 of CGST Act from the amount payable in terms of notice or statement or order under section 73 as the case may be before submitting the application. Next question है, in case of application in form number GST SPL 02 where the applicant has paid full or partial amount of tax to form number DRC 03, whether the said applicant is mandatorily required to file an application in form number GST DRC 03A for such a tax amount which he desired to get adjusted against tax demand as per form number GST DRC 07 or form number GST DRC 08 or form number GST APL 04. Answer is yes. In case where order in form number GST DRC 01, 7, form DRC 08, form GST APL 04 as the case may be has in green issued and such taxpayer has paid required amount through form number GST DRC 03, such applicant is required to adjust the said amount towards the demand created in electronic liability register as per the second provision to sub rule 2 of rule number 164 before filing the application in form number GST SPL 02. मेरे साथ ये 16 क्वेश्चन थे जिसको आपने ध्यान से सुना समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत काम आएंगे। इस रिलेटेड अगर कोई और सर्कुलर गवर्नमेंट के द्वारा किसी समय पे इशू किया जाता है तो मैं उसे ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। आपके लिए एक सजेशन ये है कि सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में जाके देखें या अपने कंसल्टेंट के माध्यम से उसको चेक करते हैं समय समय पर। और फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 से संबंधित कोई भी डिमांड हो तो इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।